नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस लॉ। लेंस लॉ का पर्पस क्या है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। So, according to Faraday's laws, what they told, whenever there is a change in magnetic flux, the current is induced. That current induced direction is given by Lenz law. So, what is Lenz law says that the direction of induced EMF or induced current is such that always it tends to oppose the cause producing it. Always, right? It opposes the cause producing it, and its law is based on conservation of energy. Energy का base है. So current is induced such a way that it always tends to oppose the cause producing it. That is the Lenz law. Now we'll see some examples how to find the direction of current. So it is based on conservation of energy. Okay, so before that you have to understand this one. So suppose there is a current carrying wire like this, I. Which direction the magnetic field will be there? Magnetic field will be which direction? Curl the fingers in the direction of current and thumb indicate direction of magnetic field. So magnetic field is inwards. Into the page is inwards, right? Okay. So suppose मान there is a current carrying coil in the current is flowing in the anti-clockwise direction. So the time curl the fingers in the direction of current and thumb indicate direction of magnetic field. So magnetic field is outwards. We studied this in moving charges magnetism. Straight wire, circular wire, solenoid. We studied this one. Okay. Chalo. Now we will see how to apply the Lenz law. It's a very important Lenz law. So I'll give some scenarios. You try to tell the direction of current. तो 3 example किया तो आ जाएगा. So this is a magnetic field. There is a coil here. Current coil. Okay. Magnetic field is increasing in this direction. Okay. Magnetic field is increasing in the inward direction. Okay. Now, definitely, according to Faraday's laws, whenever there is a change in flux, there is a current is produced. Current can be anti-clockwise or clockwise. That direction is given by Lenz law. So Lenz law क्या बोल रहा है? That what is the cause that current is produced? What is the cause? Because of what it is current is produced means because of increasing magnetic field. उसको oppose करने का. Oppose means we have to decrease the magnetic field. We have to decrease the magnetic field. So decrease करने के लिए current will be clockwise or anti-clockwise. See, magnetic field is go on increasing. उसको oppose करने का, decrease करने का. Decrease करने के लिए क्या करेंगे? The current should be in anti-clockwise direction. देखो इसके वजह से इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो कर्ल द फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड. सो इट इज डिक्रीजिंग. सो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए लेंस लॉ क्या बोल रहे हैं? सो स्टेटमेंट देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is always tends to oppose the cause producing it. So what is the cause? Because of what cause? This is a cause. This is a cause. So इसको अपोज करने के लिए क्या करने का? मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का. मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कैसे होगा? when the current is induced in the anti clockwise direction, then it will oppose the cause, right? This is the direction of the current. So मैं इंक्रीजिंग को डिक्रीज करने का, डिक्रीजिंग को इंक्रीज करने का, दैट इज अपोजिशन उसको बोलते हैं. ओके, नाउ ट्राई. मैग्नेटिक फील्ड is coming outside now. Okay, and current is like this, current coiling is like this. Okay, magnetic field is decreasing now. Magnetic field is decreasing in the outward direction. आपके तरफ में decrease होते जा रहे हैं. Now tell the direction of current. Clockwise or anti-clockwise? Magnetic field is decreasing in the towards you. So this is the cause. उसको oppose करने का means, उसको oppose करने का. अपोज बोल तो वी हैव टू मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का. इंक्रीज कब होगा?
इसका वजह से मैग्नेटिक फील्ड आल्सो कुछ शुड बी एडेड, देन ओनली इंक्रीज होगा. सो ऐड करने के लिए इट शुड बी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, विच इज Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाने से क्या होगा, देखो इस करंट कैरिंग की वजह से ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, फाइनली उसको अपोज कर रहा है. तो मैं श्रीराम, so always the current is induced such a way that it should always oppose the cause producing it. cause कौन सा है आइडेंटिफाई करो, उसको अपोजिट डायरेक्शन लगाओ, that should make the current should be matching the magnetic field का. okay, ट्राई कंप्लीट. चलो नेक्स्ट. suppose there is a current carrying coil. okay, this is a coil, circulating coil. मान लो the current is increasing. okay, then what will happen, direction of current क्या होगा, we'll see. You tell me first of all, this current carrying coil की वजह से magnetic field is inwards or outwards, अभी said. current carrying coil की वजह से thumb indicates the direction of current and curled fingers indicate direction of magnetic field. okay, so magnetic field is inwards. now here current is increasing, that means magnetic field is also increasing. So definitely, according to Faraday's laws, whenever there is a change in magnetic flux, the current is getting induced. Now clockwise or anti-clockwise. See, I'm trying. Follow. What is the cause? Because of what current is induced here? Magnetic field increasing. Increasing magnetic field को decrease करने का. Nice. If it is clockwise, देखो if it is clockwise, देखो curl the fingers direction of current and thumb indicate direction of magnetic field. Original magnetic field or this original magnetic field को support कर रहा है, oppose करने का. See, what is the cause? Tell me. Magnetic field is increasing, right? उसको क्या करने का? मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का. डिक्रीज कब होगा? व्हेन इसका मैग्नेटिक फील्ड शुड अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग. सो आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज लगाने से क्या होगा, देखो अप्लाइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज लगाने से कर्ल द फिंगर्स, देखो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मींस इनडायरेक्टली नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग डिक्रीज्ड. सो अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. अंडरस्टैंड कर रहा हूं सो मच. ओके, ट्राई ट्राई करो. current is decreasing. I put a coil here. Now first of all, magnetic field here, tell me, because of this current carrying wire inwards or outwards, because of this one. ऐसा ना, thumb indicate direction of current and curled fingers indicate direction of magnetic field. First of all, magnetic field is inwards. Now this magnetic current is decreasing means magnetic field is decreasing. Now this is a cause. What we have to do? Oppose करने का. मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा, डिक्रीज है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने का. नो टेल में, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज लगाने से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज लगाने से ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को इट इज अपोजिंग सपोर्टिंग? अपोजिंग बोल तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग? डिक्रीज कर रहे हैं आप. ओके, तो आंसर इज क्लॉकवाइज. देखो अंडरस्टैंडिंग ना, आपको सो क्लॉकवाइज आएगा. लेंस लॉ क्या बोल रहे हैं? द मैग्नेटिक द करंट इज इंड्यूस सच ए वे, करंट तो डेफिनेटली इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा. ओके, बट इट शुड अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट. अपोज करने के बोले तो इसे डिक्रीजिंग हो रहा है, उसको अपोज मींस व्हाट इज मीनिंग, उसको इंक्रीज करने का. इंक्रीज करने का दोनों सपोर्ट करने का, देन ओनली इंक्रीज, राइट? देखो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स. आप इसके वजह से, इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से देखो क्लॉकवाइज डालने से क्या होगा, इट इज आल्सो इनवर्स. दोनों मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनवर्स, सो इंक्रीज हो जाए फाइनली. और एम इज टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड अपोज करने के बोले तो. ओके, ट्राई करो, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट, सी एम ट्राई. सपोज देयर इज ए coil, circulating coil, current is flowing in the anti-clockwise direction in this coil and current is decreasing. Okay, I put one more coil here.
नाउ इसमें करंट क्या होगा, थिंक एंड टेल फर्स्ट ऑफ ऑल इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक विच डायरेक्शन इट विल बी देयर, इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में विच डायरेक्शन इज देयर, सर इनवर्स। इनवर्स भाई, टेल मी, राइट हैंड अप्लाई करो, राइट हैंड, हाँ। कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल करो, सर इनवर्स से आ रहा हूँ। वही बोलो कैसा हो रहा है, कर्ल नहीं, आप ऐसा है क्या, ऊपर ऊपर है, टेल में सर ऐसा ऐसा क्यों लगा रहे, इधर इधर ही क्या, करंट इज ऐसा है ना, जो पुट द फिंगर्स ऊपर नहीं लगा सकते, हाथ नहीं है, नहीं आएगा, ऐसे लगो, एक्स वाई प्लेन योर अप्लाई, टेल में एक्स वाई प्लेन लगो, हाथ लगो ऐसा, हाँ, हियर कर्ल करो, हियर कर्ल करो, समथिंग हियर हियर समवेयर, एरो का डायरेक्शन में देखो करंट, टेल में इनवर्स आउटवर्ड्स, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्स आउटवर्ड्स, बोलो, हमारे इनवर्स क्यों बोलते हैं, आउटवर्ड्स है, ठीक है, आउटवर्ड्स इज मैग्नेटिक फील्ड, थिंक कर, सी 2-3 बार किया तो कुछ समझ में आ जाएगा, वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स नाउ, हाँ, now tell me, think and tell, now magnetic field is increasing or decreasing, tell me Sriram, magnetic field is increasing or decreasing, here current is what is happening, डिक्रीजिंग। so magnetic field क्या होगा, डिक्रीज। magnetic field is decreasing, okay, decreasing, अप्लाई क्लॉकवाइज। clockwise, why, सर टू रिड्यूस। no, what is the cause, tell me, what is the cause, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। decreasing, so this is the cause, right, उसको क्या करने का, लेंस लॉ आने के लिए उसको क्या करने का, we have to increase it. increase or decrease, So increase. oppose means Yeah, we should increase. increase the magnetic field, okay, increase the magnetic field, okay, increase करने के लिए the current should be which direction, Clockwise. clockwise लगो, देखो clockwise लगो, now curl the fingers in the direction of current, tell me, curl the fingers which direction, because of this current carrying coil की वजह से magnetic field which direction, curl the fingers, finger हाथ लगाओ, हाथ लगा के बोलो, curl the fingers in the direction of current, so which direction the magnetic field is coming, थंब का डायरेक्शन किस तरफ है, उसी डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा, चल में इनसाइड, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है आपको डायरेक्शन में, योर मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग लाइक दिस, दोनों कैंसिल आउट ईच अदर, फाइनली मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल डिक्रीज्ड, आपको एम क्या है, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, यू आर टेलिंग, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड मींस आप जो कौन सा डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको ऐड करो, सो दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड शुड इंक्रीज, आप उल्टा लगा रहे, उल्टा लगाए तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा फाइनली, सो आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, नाउ देखो, देखो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड्स, ऐसा आ रहा है, नाउ इस करंट कैरिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कमिंग आउटवर्ड्स, सो दोनों मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जा रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहे हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, डाइंग मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, ओके, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा ऑलवेज, ओके, so direction of induced current is such a way that it should always oppose the cause producing it, cause क्या है उसको अपोजिट डायरेक्शन में आपको अप्लाई करने का, क्लॉक हाथ घुमाना सीखो, नहीं तो शर्मा है तो योर ओनली एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, सो आपको हाथ ऐसे से नहीं है, चेक करो, करंट इज फ्लोइंग इन दिस एक्स वाई प्लेन में लगाओ ना, क्या हो जाएगा, ओके, तो दूसरा आप ही करने वाला है, थिंक करके एक एक स्टेप में बोलो मुझे, दिस करंट कैरिंग आई इज इंक्रीजिंग, ओके, इन दिस डायरेक्शन में करंट इज ग्रोइंग, आई पुट ए कॉइल हियर, ओके, now tell me, because of this current carrying coil magnetic field here is inwards or outwards, बोलो आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड लगा, एंड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बिकॉज इधर क्या है, करंट इज इंक्रीजिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, and now what is the cause that current is produced, tell me, what is the cause, magnetic field is increasing, right, so this is the cause, now इसको अपोज करने का, अपोज बोले तो क्या करेंगे, अपोज बोले तो we have to decrease the magnetic field को
डिक्रीज करने का फाइनली. डिक्रीज मीन्स उसको विच डायरेक्शन जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा. नाउ टेल मी करंट विच डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है. सच दैट यू शुड अपोज द कॉज. मतलब उसको डिक्रीज करने का फाइनली. ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ऐसा. नाउ डिक्रीज करने के बोल तो आपका करंट शुड बी सच विद दैट यू शुड अपोज द कॉज. Sir, clockwise. क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज लगाओ. क्लॉकवाइज लगाने से क्या होगा? कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट. थंब इंडिकेट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड. सो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा. नेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग डिक्रीज. समझ आ रहा है? दिस आंसर एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज इज आंसर. अंडरस्टूड सात्विक? यस. नाउ देखो आपको दे विल गिव मैग्नेट इन ए कॉइल. मैग्नेट इन ए कॉइल का ये समझो. ये रिमेंबर दिस वन. करंट इज फ्लोइंग इन द clockwise direction मान लो. It has when the current carrying coil is there is magnetic field. That means it has two poles. Magnetic movement we studied, right? Two poles, north pole, south pole. This phase is acting like north pole or south pole. This phase is acting like north pole or south pole. And anti-clockwise में which pole it is acting? देखो इस phase में it is acting like a south pole. So understand होने के लिए क्या करेगा? They'll extend this S like this. ऐसे लिखिए. So that you will understand that anti-clockwise में south pole it is acting like. And ये वाला नॉर्थ पोल जैसे एक्ट हो रहा है. टू अंडरस्टैंड क्या करेगा वो लोग? एक्सटेंड करेगा ऐसे. नॉर्थ पोल. सो दिस इज एक्टिंग लाइक नॉर्थ पोल, दिस एक्टिंग लाइक साउथ पोल. ओके. ओके. नाउ ट्राई. नाउ बार मैट इज देयर. साउथ, नॉर्थ. ओके. देयर इज अ coil. There is a coil. And I am moving this bar magnet towards the coil now. Okay. Now use the lens. I am seeing from here. Now use the Lenz law to find the which pole here and here. Which pole is here? Which pole is here? See here, magnetic field is coming closer means magnetic field is increasing or decreasing in the coil. Mein magnetic field is increasing, right? Use Lenz law to find the direction of current. I am seeing this frame में. इधर इस frame में देखो. I am bringing the bar mat है. I am bringing closer to the coil. Then what will happen? Which direction the current will be? Anti-clockwise or clockwise? From this frame मैं साइड से देख रहा हूँ. मेरे साइड से देख रहा हूँ. इधर coil रखा है, इधर coil रखा. I am bringing the magnet closer. So when I bring closer, the magnetic field is increasing. This is the cause. उसको अपोज करने के लिए क्या करने का? मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का. मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कब होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? देन ओनली इट इज अपोजिंग, राइट? देखो द कॉइल इज लाइक दिस, राइट? कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट and thumb indicate direction of magnetic field. So this is anti-clockwise direction from this point of view. Okay. Now which pole it is acting from my side? Which pole it is acting now? Anti-clockwise will be north pole, right? North pole देखो ऐसे है ना. So this is acting like north pole. This is acting like south pole. So now shortcut क्या है? Instead of finding current वगैरह, you tell me when the magnet is coming closer, magnetic field is increasing. उसको decrease करने के लिए tell me this should act like north pole or south pole? This should act like north pole because north pole oppose करेगा ना, oppose करेगा. So that's why north pole south pole लगा दो. Then north pole is anti-clockwise direction, right? Anti-clockwise लगाओ. Shortcut. Instead bar mat का and coil का कभी भी ऐसे north pole south pole लगाने के बाद you decide which direction current is there. Okay. Try करो. सादिक try. This is a coil. This is a bar magnet. South pole, north pole. Here no formula. Lenz law is no formula. Just direction के लिए. Okay, magnet is coming towards this one. I am seeing from here. Okay, tell me. Which pole it is acting this side, which pole is acting this side? When the magnet is coming closer, the magnetic field is increasing. Huh? North and north. This side is South. this is acting north pole. South pole means it is clockwise direction. From this point of view, this is clockwise direction, and from this point of view, it is anti-clockwise direction. Okay. So it should oppose the cause producing it. करेगा, try करो. Okay. This is a bar mat. North pole, south pole, and this is a coil. And A motion.
Tell me. When you from seeing from the top view. Okay. Now which direction Shyam try करेगा? देखो, when the magnetic आप बोलो शिवंगी, when the magnet is coming closer, the magnetic field is increasing. इसको क्या करेंगे? अपोज करने का. अपोज means which pole should be here? ऊपर? North Pole. North pole. And this is south pole. And current तो differently आएगा ना. North pole means it is anti-clockwise direction. ऊपर से देखने से anti-clockwise direction आएगा. नीचे से देखने से clockwise आएगा. Okay. Now these all things. Now try करो. Magnetic field. So this is a coil. Okay. And here the coil is coming closer to the magnetic field. मतलब पहले कम था, बाद में is entering into the coil. Coil is entering into the magnetic field. And B is the constant there. B is constant. Tell me, current will be induced or not? पहले ऐसे था. It is coming closer to the magnetic field. Current will be induced or not? Definitely there is a change in flux, right? Current is induced. No direction of current बोलो. Clockwise or anti-clockwise? Let me try. When the coil is coming closer, the magnetic field is increasing. Lenz law क्या बोल रहा है? It should decrease. The current is induced such a way that it should decrease the cause producing it. So now tell me, clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise? Very good. Anti-clockwise direction. Anti-clockwise लगाने से क्या होगा? ये इसका current के वजह से magnetic field is outwards and originally magnetic field is inwards. So cancel हो जाएगा. Finally magnetic field is getting decreased. This is the thing you have to understand. Okay? Chalo. Now we'll see the numericals based on this. Formulas the same है. Faraday's law only total अभी तक पढ़ रहा है. Lenz law is only direction आने के लिए. That's it. Okay? चलो. So क्या है? There is a solenoid. There is a battery and a switch and resistance is there. And there is one more coil. Here one resistance I put. A coil is not attached. बाजू बाजू में है. Okay? When you on the switch, what will happen? The current start flowing in this direction. ऐसा flow हो रहा है. Okay? Definitely देखो, curl the fingers in the direction of current and thumb indicate direction of magnetic field. Is current carrying coil का वजह से there is a magnetic field linked like this. Magnetic field like this. Okay. And now question is, when switch is opened, switch open कर दिया for several minutes, find the current in resistance A to B. मतलब direction चाहिए, direction of current चाहिए. मतलब current will flow from A to B या B to A I want. Okay. See, पहले करंट चल रहा था ऐसा zoom 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 बोल के करंट चल रहा था. सडनली क्या किया, मैं स्विच ऑफ कर दिया. Now current start decreasing. Okay. I'll now try. I'll tell one you try to do. When current start decreasing, you tell me magnetic field is decreasing or not? Magnetic field is decreasing. So Lenz law क्या बोल रहा है? Whenever magnetic field is decreasing, उसको oppose करो. Magnetic field को increase करने का. Increase करने के लिए here current should be which direction from like this A to B or B to A na? Magnetic field is decreasing in this direction. So we have to increase the magnetic field. Oppose बोले तो increase करने के लिए A to B. yes, A to देखो A to B जाएगा. A जाएगा 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 B जाएगा. Why? देखो A to B ऐसे गया तो नहीं B to A to B देखो curl the fingers in the direction of current. It is opposing, right? मुझे क्या करने का? We have to, when your switch is open, the magnetic field इधर क्या हो रहा है? Decrease हो रहा है. Decrease होता है, we have to increase, right? Increase करने के लिए we should be from B to A. We should from B to A. ऐसा रहेगा B to A. समझ में आ रहा है? देखो magnetic field is decreasing. उसको increase करने के लिए we have to support, right? उसी डायरेक्शन में लगाना का, राइट? इंक्रीज होगा, नहीं तो उल्टा लगा तो और भी डिक्रीज हो जाएगा, राइट? सो उसके लिए कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो दैट मींस कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? ओह सॉरी,
A to B on, right? तो देखो कर्ल द फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो ये करंट आ रहा है ना, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा. हाँ, तो A to B इज आंसर. टोटल A to B इज आंसर. फर्स्ट वन इज A to B. समझ में आ रहा है? देखो, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओनली फर्स्ट कॉइल देखो, समझ में आ जाएगा. करंट शुड बी डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स. इसको सपोर्ट करने के लिए डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स मींस इट इज फ्लोइंग लाइक दिस. A to B इज आंसर. ओनली फर्स्ट कॉइल देखो, समझ में आ जाएगा. फिर से पीछे से वो सब मत देखो. Curl the fingers in direction of current and thumb indicate direction of magnetic field. So इस magnetic field का इस support कर रहे हैं. That means magnetic field finally increase होगा. ऐसा. Okay. Now try for a second one. Now coil B is brought closer to coil A. This is A to B is answer. Okay. Now coil B is brought closer to coil A. मैं coil B को, इसमें तो current पास हो रहा है, इसमें तो current पास हो रहा है, ऐसा 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 current flow हो रहा है. ओके. नाउ कॉइल बी को मैं लेके आया नजदीक में. देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? मतलब A to B या B to A है ना? टेल मी. व्हेन कॉइल बी को इफ आई ब्रिंग क्लोजर टू द कॉइल A, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है. बिकॉज कमिंग क्लोजर, राइट? क्लोजर क्लोजर क्लोजर, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग. लेंस लॉ इससे क्या बोल रहा है? The current is induced such a way that it oppose the cause producing it. अपोज करने का. अपोज बोले तो देखो, कर्ल द फिंगर्स ऊपर से देखो, नीचे से ऊपर मैं कर्ल करूंगा. द थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अपोजिंग, राइट? दैट मींस फर्स्ट कॉइल में देखो ऐसे जा रहे हैं. ऐसा मींस नथिंग बट इट इज गोइंग फ्रॉम B to A, A to B ना. करंट इज फर्स्ट कॉइल का B to A, राइट? B to A. So second answer is B to A. समझ आ रहा है? हाँ, नो ये ट्राई करो. आप ही बोलो. थर्ड आंसर. टेल आंसर. व्हेन रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज डिक्रीज्ड, इज वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना. रेसिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो करंट क्या होगा? डिक्रीज या इंक्रीज? रेसिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, करंट क्या होगा सर्किट में? Increase. इंक्रीज. इफ करंट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. सो नाउ व्हाट विल डायरेक्शन? A to B या B to A? मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. तो उसको अपोज करने के लिए फर्स्ट कॉइल का देखो, ओनली फर्स्ट कॉइल देखो. कर्ल द फिंगर्स लाइक दिस एंड इज अपोजिंग, राइट? सो दैट मींस नथिंग बट B to A ओनली. सो थर्ड आंसर इज आल्सो B to A. समझ में आ रहा है? सो ओनली फर्स्ट वायर का देखो, समझ में आ जाएगा. फर्स्ट वायर का देखो, दैट्स इट. सो आपको मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. सो करंट इज इंड्यूस्ड सच ए वे दैट अपोज द कॉज. अपोज कॉज मींस इसको डिक्रीज करने का. डिक्रीज करने के लिए मैं सपोज मैं ऊपर लगाया करंट को, देखो इट इज अपोजिंग. अगर सपोज नीचे लगाए तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में ये सपोर्ट करेगा. सो दैट्स व्हाई ऊपर ऊपर एरो मींस नथिंग बट फ्रॉम B to A करंट इज फ्लोइंग. ओके. नाउ ट्राई करो. इसका आंसर बोलो. हियर मैग्नेट इज देयर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल इज देयर. I left the magnet, it is going with some acceleration A. डाउन से नीचे गिर रहा है. Now which of the option is right? State the acceleration of the magnet. Just I dropped the magnet. A is lesser than G. Okay, आप बोलो सात्विक. Same thing. हाँ? Same thing. Why? Reason बता. There's North Pole repelling it. Yes. See, normal magnet को ड्रॉप करना अलग है, विथ कॉइल से, कॉइल के अंदर से भेजना अलग है. ओके. नॉर्मल मैग्नेट को ड्रॉप करते तो A equal G. बट अभी क्या होगा देखो, when I bringing closer to the coil, the magnetic field is increasing. So current is induced such a way that it should oppose the cause. Oppose the cause means this should be north pole, this is acting like south pole. So repel होगा ना, so थोड़ा धीरे 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 गिरेगा. That's why कभी भी देखो एक मैग्नेट को, एक कॉपर ट्यूब को ले लो एंड वुडन ट्यूब देखो. ये वाला वुड है, ये वाला कॉपर है. सपोज आई ड्रॉप ए मैग्नेट, अ स्मॉल मैग्नेट बॉल मान लो, ए स्मॉल मैग्नेट बॉल. ओके. सेम लेंथ है. सेम टाइम में इफ आई ड्रॉप, व्हाट विल हैपन? दिस विल कम फर्स्ट आउटसाइड. ओके. ये वाला बिकॉज ऑफ अपोजिंग नेचर धीरे 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 गिरेगा. आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद नीचे गिरेगा.
it will take more time because always oppose होता जा रहा है, current is getting induced in the coil, opposing हो रहा है. Okay, that's why A is less than G. ये वाला. Not right. Now magnet is going away from the coil. Then what will be the thing? A is greater than G. A is greater than G. Victor Sadik. So yes. ऐसा होना है भाई. So it's repelling. South pole is repelling. नहीं, magnetic field is when it's going outside, magnetic field is decreasing or increasing? It is going. See, this bar magnet is going away from the coil. Magnetic field linked with this coil is decreasing or increasing? Decreasing. Decreasing. If the magnetic field is decreasing, So it should normal. oppose the cause, right? Oppose the cause means this should act like a south pole, and this will act like a north pole, right? No. आपको क्या करने का? Magnetic field is decreasing. उसको increase करने का. Increase करने के लिए this will act like a north pole. This will act like south pole, right? Yes. So tell me, it will fall with G or less than G? Less than G. Less than G. समझ आ रहा है? ग्रेटर देन जी तो बहुत मुश्किल है, उतना जी से ज्यादा वाला. देखो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहे हैं ना, दैट्स व्हाई क्या होगा, इट विल नॉट फॉल, अट्रैक्ट करते जाएगा ना, थोड़ी देर लेस देन जी तक जाएगा. ओके, चलो लेंस लॉ समझ में आया. ओनली डायरेक्शन को दिखाने के लिए लेंस लॉ है. वो क्वेश्चंस कैसा आएगा आई टेल यू. फैराडेस लॉस ओनली, फार्मूला इज सेम, वही क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी भी. वी आर डूइंग डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी और डी फाइव बाई डी टी मॉड लगा के कर रहे हैं. ओके, चलो ट्राई करो. I'll give you options. Try. Same type of question, Faraday's law अप्लाई करके सॉल्व करो. ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज विल बी बिकॉज ऑफ लेंस लॉ से आएगा. ओके, आंसर सेम आने के बाद also चेक करना पड़ेगा डायरेक्शन. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चंस विल बी गिवन इन JEE मेंस. The magnetic field in the cylindrical region is shown in figure, increasing at a constant rate of 20 milli Tesla per second. मतलब magnetic field increase हो रहा है, increasing or decreasing? Magnetic field increases at a constant rate. मतलब what is given this one? What is 20 milli Tesla per second means? Tesla is B, right? So dB by dt is how much they given as 20 into 10 power minus 3 Tesla per second. Okay. Each side of a square loop ABCD has a length of 1 centimeter. Each side is 1 centimeter. Square loop है ना? And resistance of 4 ohms. Each side of a length and resistance of, मतलब एक side का resistance is 4 ohms. 4 ohms एक side का. Find the current of in the wire AB if the switch is closed. Switch close करने से कितना current flow होगा in the wire में? Okay, here no battery is there. Either no battery. When you on the switch, actually current नहीं जाएगा. But क्या हो रहा है? Magnetic field is increasing, right? Here magnetic field is increasing at a rate. First of all, tell me the current should be induced in the coil is clockwise or anti-clockwise? Think करके बोलो. Magnetic field is increasing at a rate of this much. इतना increase हो रहा है. इस coil में current will be मतलब which direction? So clockwise. Anti-clockwise. Why? The magnetic field is increasing is the cause. उसके वजह से current is reduced, right? उसको oppose करने का. Oppose means magnetic field को decrease करने का. Decrease means आपको if I put anti-clockwise direction, then देखो curl the fingers in direction of current is देखो original magnetic field ऐसा है, उसको opposite direction में ऐसे जा रहा है. So finally net magnetic field is getting decreased. Finally our aim is to decrease, right? Lenz law always oppose the cause. Cause क्या है पहले आइडेंटिफाई करो, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन लगाओ, देन चेक करो करंट डायरेक्शन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ऐसा लगाने से क्या होगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग डिक्रीज्ड. सो दिस इज आंसर. सो एंटी क्लॉकवाइज इज आंसर, मतलब आपको क्लॉकवाइज वाला रिमूव कर दो. ओके,
Now fine. What answer you got? Yes, sir. कुछ नहीं आंसर है करो something only copy करेगा Answer हाँ 1.25 and 10 power minus. रंग आप करो सो करंट आने के लिए भी लर्न श्रीराम मालूम है ना करंट फॉर्मूला क्या है E by R E फाइंड करो E आने के लिए फॉर्मूला क्या है मॉड इंस्टेंटेनियस का बिकॉज डिफरेंशिएशन में दिया ना E इंस्टेंटेनियस इज मॉड फॉर्मूला क्या है d∅dt राइट दिस इज द फॉर्मूला नाउ फ्लक्स फाइंड करो B डॉट A B A cos theta स्टेप बाय स्टेप लिखो सात्विक so initially I told you area vector magnetic field are taken in the same direction right area vector and magnetic field so flux कितना होगा BA cos 0 BA okay now area फाइंड करेंगे now सब्स्टिट्यूट करो इसमें कितना होगा E instantaneous is d by dt of BA now B is changing right area is constant बाहर आ जाएगा और सब्स्टिट्यूट and get the flux One point two five into 10 power minus 7. कितना 1.25 into 10 power minus 7. yes correct is answer you will see somewhere सात्विक है that's why not do steps नहीं करेगा something answer मिलेगा I think you will keep on Google में search करेगा maybe you will get the answer कुछ नहीं है Add steps. R is how much R कितना लिया सात्विक tell me The 16 ohm. भाई 4 sides straight. हाँ आता है ना ठीक है चलो डाउट लगता है मुझे चलो नेक्स्ट So you're on mute. हाँ tell me current direction which direction होगा first of all tell me magnetic field is decreasing at a rate of this much So 10 anti-clockwise. फर्स्ट डायरेक्शन बोलो करंट का डायरेक्शन बोलो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज magnetic field is decreasing Anti-clockwise. you tell me सात्विक Anti-clockwise. So बोलो रीजन बोलो विदाउट हाँ magnetic field is outside. हाँ magnetic field is outside but decreasing Yes. लेंस लॉ क्या दिस magnetic field is decreasing लेंस लॉ क्या बोल रहे हैं इट अपोज द कॉज सो Yes. कॉज अपोज करने के बोलते हो magnetic field को इंक्रीज करने के मींस करंट को चेक करो इफ आई पुट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो कर्ल द फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट magnetic field is coming in the same direction that of magnetic field increasing so answer is anti clockwise okay ठीक है now find current it's trying to find magnitude direction of current magnitude find करो so now what is the formula for current I is equal to E by R we learned only three formulas right that Faraday's law वही है E by R and now E कैसा आएगा E is equal to delta phi by delta t or d phi by dt anything they given we can see they given what is the thing they given differential form में दिया ना what they told magnetic field is decreasing at a rate of Tesla per second means magnetic field dB by dt is given as 10 Tesla right so flux E instantaneous formula क्या होगा mod का is equal to mod d phi by dt
d by dt of flux is ba. So here what is a is constant, बाहर आ जाएगा dB by dt. Now substitute area of a circle is pi r square. Substitute करो कितना होगा? Area is given directly. All right. Area directly they given है 2 meters per second, 2 meters square. So क्या होगा? 2 into dB by dt 10. So it is 20 volts, right? 20 volts will be this one. That means you tell me there is one more because of this current induced वाला उसका वजह से 20 volts आ रहा है ना. I am replacing with the battery. देखो, this is negative terminal, this is positive terminal. Minus plus. One more battery आएगा. इसका voltage is how much? 20 volts. Why I put positive here only? Because current is coming always from outside from the positive terminal. Positive terminal से बाहर आएगा current, right? Now we have two batteries. Net equivalent EMF is how much? Net equivalent is EMF is how much? It is E1 plus E2, E1 minus E2. दोनों same polarity, reverse polarity देखो. When it is coming like this, current is flowing. It is entering from positive to negative. When it is coming like this, it is entering from negative to positive. So आपको subtract करना पड़ेगा equivalent. So what is the E equivalent? 30 minus 20 is 10 volts. So this will be the voltage. Now find करो current. Current is 10 by resistance is how much? 5 ohms. So it is 2 amperes anti-clockwise direction is answer. So because of this current के वजह से there is a voltage. वो voltage में battery से because इधर भी battery है ना, I will replace with the battery. So net voltage will be subtract करना पड़ेगा. Subtract करके we got 10 volts. 10 by R किया तो we'll get 2 amps. Okay. So इसमें क्या होगा? थोड़ा link with the moving charges also आपको थोड़ा link होगा. Straight wire का anybody can tell infinite straight current carrying wire के वजह से a distance दूर में magnetic field. Infinite current carrying wire की वजह से r distance or a distance दूर में magnetic field. We studied straight wire, circular wire, solenoid, toroid. U naught by 2 pi I by A. V naught by 2 pi into I by A. Okay. So generally you tell in terms of 4 pi. Okay. So that आपको V naught by 4 pi directly you can substitute 10 power minus 7. So tell me V naught by 4 pi into 2 I by A. Right? चलो. So how did we get the polarity of the new? Current anti-clockwise direction मालूम हो गया ना? Anti-clockwise direction. So current always battery से positive terminal से only the current is coming outside always. Positive terminal से only. So that's why I put here positive so that the current is coming outwards from positive terminal only. Okay. Next. ना करो without copying Satvik. Current is given, I is given as 2.5 into 1 plus 2t into 10 cube ampere. This is a current. Variable current is given. Current is changing with respect to time. Increases in a steady rate. In a long straight wire. A long straight wire में zoom बोल के increase हो रहा है. Increasing at a constant rate. A small circular loop of radius 10 power of minus 3 meters. A circular loop है. Small one. इसका radius is 10 to the power of minus 3 meters. Has a plane parallel to the wire and placed distance 1 meter from here to here. 1 meter distance दूर में I placed. The resistance of the loop is also capital R also given 5 pi into 10 to the power of minus 4 ohms. Find the approximate value of induced current in the loop. Current induced कितना है? Okay, इसका I dash मान लो. I dash is how much? Same formula, Sriram. I is equal to I dash is equal to E by R. R तो मालूम है resistance. E induced EMF find करना. So E induced. You try to find EMF, then substitute. So E instantaneous is mod d5 by dt, right? Flux find करो पहले, then substitute.
Flux is B initially. इसके वजह से magnetic field is inverse, right? इसके वजह से magnetic field is inverse. Okay, area vector magnetic field initially same direction लगा रहा हूँ. BA. Area is pi r square. B into pi r square. But B we don't know, right? B find करने के लिए again we have to use the formula. Substitute करो. तो magnetic field का formula use करो. Magnetic field is mu naught by 4 pi into 2I by A. देन मैग्नेटिक फील्ड आए तो फ्लक्स आ जाएगा. इसको डिफरेंशिएट किया तो ईएमएफ आ जाएगा. इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर आई आ जाएगा. सो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 पावर माइनस 7 2 into 10 power into minus 2 in 10 power of minus 6. यस करेक्ट. 2 into आई के जगह में दिस वन 2.5 into 10 cube into 1 plus 2t by A is the distance 1 meter. So B value कितना होगा? 2.5 5 into 10 to the power of minus 4 into 1 plus 2t. This is a magnetic field. And flux आने के लिए into area करने का, right? Flux is B, right? So 5 into 10 to the power of minus 4 into 1 plus 2t into area is pi r square. So pi into r square. R square is 10 to the power minus 3 whole square is 10 to the power minus 6. So कितना होगा? Flux is 5 pi into 10 to the power of minus 10 times 1 plus 2t. Okay. Now d phi by dt डिफरेंशिएट करने का टू गेट ईएमएफ. सो एक पूरा कांस्टेंट है, 1 का 0 है, 2 का 2 है डिफरेंशिएशन. सो कितना होगा? पाई इज इक्वल टू 10 पाई इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 10, राइट? 0 प्लस 2 इंटू 1. सो 2 से मल्टीप्लाई करें 10 पाई इंटू 10 पावर ऑफ माइनस. सो पाई इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 9. Okay. Now flux this is EMF, right? I differentiate EMF I got. Now what is by R, right? By R किया तो कितना हो? R is how much? 5 pi, right? Okay. ठीक है, ऐसे रहने दो. By 5 pi into 10 power of minus 4. So 5 pi 2 जा. So 2 into 10 power of 2 into 10 power of minus 4. So current, right? Amperes. And clockwise and anti-clockwise इसमें. सादिक बोलो. तो वो लोग बोले थे, वो बोलेगा इसलिए. बोलो. हाँ? Anti-clockwise. Oh, good. Very good. मतलब your understanding. Okay, चलो. Then तो Faraday's laws का Lenz law का based ऐसा वाला. Now induced EMF in a rotating coils की वजह से. Now rotating coil की वजह से. You will see things. रोटेटिंग कॉइल मीन्स आपको क्या करने का? कॉइल को मैं ऐसा रोटेट करता जा रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से रोटेट करूंगा. देन आल्सो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. फॉर्मूला तो सेम है. फ्लक्स फाइंड करने का, चेंज इन फ्लक्स फाइंड करके बाय रेजिस्टेंस किया तो करंट आ जाएगा. वही है ना, डेल्टा फाई बाय आर, वो सब वही है ना फॉर्मूला. चलो ये करो. A circular coil is rotated in a uniform magnetic field about its diameter as shown figure. So the magnetic field is inverse. Coil is there, is rotating with angular velocity omega. Area of the coil is given, frequency is given, resistance is given. Find the induced EMF, current and charge in half rotation and full rotation. Half rotation में resolve things find करो, full rotation में resolve things find करो. What is given? Magnetic field is given as 4 into 10 to the power of minus 2 Tesla. Area is given as 25 centimeters, right? So 25 into 10 to the power of minus 2 whole square is minus 4 meters square. Frequency, can you tell me frequency is how much? Frequency is how much?
Number of revolutions per minute is called what? Actually, frequency will be number of revolutions per second. Per second. Okay, per second means 300 by 60. 5. 5 hertz is the frequency. Okay, the resistance of the coil is 2 ohms. Find the average induced EMF for half rotation. First half rotation we are trying to find. Okay, now EMF find karo. EMF. चलो. See, initially area vector, magnetic field are in the same direction. Half rotation means क्या करेगा? इसका half rotation क्या होगा? Means angle is how much? Area vector magnetic field half rotation में. बोलो. Half rotation different है, full rotation. Half rotation means either say half rotation means exactly I will go in the backward direction, right? Backward exactly. That is called half rotation. So angle कितना होगा? इसका पहले ऐसा था. Initially area vector magnetic field same है. Half rotation means ऐसा rotate करो आपके तरफ. So area vector and magnetic field are opposite direction, 180 degrees. No करो. Now try to find this one. Average induced EMF is formula क्या था? Delta 5 by delta t. Mod. Delta phi is final flux minus initial flux upon time. 5 into 10 power minus 4. For EMF induced, huh? Yes, sir. Delta t wrong किया होगा. Delta t is how much? 1 by frequency, 1 by 5. 1 by 5. No. This is for, see, one complete revolution, right? मुझे half revolution के चाहिए. So we have to calculate that one. One revolution is how many time frequency is coming? Check करो. One revolution is how many seconds are there? Frequency is 5, right? 1 by 5 seconds. Half revolution will be 2 by 5. 1 by 10, right? Right. 10 seconds. This so time is 1 by 10 use करने का. By t is 1 by 10. now use करो. 10 power minus 5. 10 पर minus 5. No, wrong. मतलब flux में भी wrong किया होगा. Okay, flux final flux कितना है? Tell me. Final flux is how much? See, कभी भी ऐसा मत करो. Dad first only don't substitute. First write in variables, then last में substitute करो. देखो, final flux means area vector magnetic field are in the opposite direction. So कितना होगा? Minus B, right? Here number of turns is given, huh? No, right? Number of turns is not given, right? So minus BA minus initial flux is how much? BA by T. Mod है ना? So 2BA by T. Now substitute the value. Now substitute the value. 2BA by T. Substitute करना. 2 into magnetic field is 4 into कितना साथ है आपको? So 20 and 10 power minus 5. 20 into 10 power of minus 5. Okay, देखेंगे. B area is 25 Minus into 4. 10 power minus 4 by 1 by 10. कितना? तो ऊपर 10 आए तो 10 पर minus 1 हो जाएगा. So 100, 200 कितना? 200 into 10 to the power of minus 5. So मतलब 2 into 10 to the power of minus 3 volts. This answer 2 into 10 to the power of minus 3 volts. Now current find करो half revolution में. Current find करो. I is equal to E by R. How much? 10 to the power of minus 3. Right? Now delta Q भी पूछ रहे हैं ना? Charge also. Delta Q is delta phi by R. Delta phi by R. ये तो न्यूमेटर सेम है. by R रहेगा. That's it.
10 power minus 2. Yes. Now for full cycle का, can you tell me anybody? EMF will be in the कितना हो? So initially ऐसा है, बाद में वही same direction है. Change in flux will be how much? 0. So all zero will be zero, right? So Right. current zero. So there is no change in flux, zero. Everything is same. Okay. So हम लोग next class में will go for some more concepts का.